हमारा ये उद्देश्य है कि जनता जो है उसे कानून के मामले में और ज्यादा जागरूक किया जाए। कानून क्या कहता है, कानून के अंदर क्या-क्या उनके अधिकार हैं, इसको लेकर वो पूरी तरह से जागरूक हो। और इस मुहिम में हम आपके समक्ष लाते हैं देश से बड़े-बड़े कानून जो आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वी विजय कुमार सर, जो कि सिटिंग वाइस चांसलर हैं लॉ के एक बहुत बड़े संस्थान में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एम के भंडारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लीगल स्टडीज में दिया है, उन्होंने पढ़ाया है लॉ, और आज भी वो अपने आप को लॉ के विद्यार्थी कहते हैं। आज का विषय एक बहुत ही अहम विषय है कि आखिरकार वोटर का अधिकार क्या है इस लोकतंत्र में। क्योंकि हम जो देखते हैं और एक जो परसेप्शन बन चुका है वो ये है, एक बार वोट दे दिया उसके बाद 5 साल फिर से शायद गुलामी की तरफ ही हम लोग जाते हैं। और इस परसेप्शन को तोड़ना, इस परसेप्शन को समझना कितना जरूरी है, ये आज हम जानते हैं। सो लेट अस वेलकम डॉक्टर वी विजय कुमार सर। सर, यू हैव बीन involved in this particular topic in all your tenure. So, firstly, the perception what people believes that only some days before in elections or before elections are the people days. Otherwise, it is all the days of the politicians, and people have to fold their hands in front of politicians. They have no power. So, what do you have to say about this? And how can a voter exercise his power to his fullest? Yeah. Thank you. Good morning to you. And at the outset, मैं पहले वरुण बंसाली, एडिटर इन चीफ राजस्थान संवाद को, और मेरा दोस्त एम के भंडारी, दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ठीक कहा है, हमारा डेमोक्रेसी तो इतना बड़ा है, 5 साल में क्या क्या होता है किसी को पता नहीं है। मैं शुरू करने के पहले एक मानवेंद्र नाथ राय के बारे में एक शब्द सुनाना चाहता हूँ सब लोगों के लिए। मानवेंद्र नाथ राय, a first communist who turned socialist and came to India, इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी तरह एक डेफिनेशन दिया है। ये डेफिनेशन लोगों को पहुंचना चाहिए। ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में सिर्फ उन्हीं के नहीं है, लोगों को भी पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये कहा है, पीपल डेमोक्रेसी, इसका डेफिनेशन वो दे रहा है, पीपल आर पावरलेस इन बिटवीन इलेक्शंस, राइट? पीपल आर पावरलेस in between elections. So once in 5 years or maybe sometimes sooner, you get the opportunity to vote, you go and cast the vote, and that is a place where we commit mistakes, and then it is very difficult for us to call them back. Unlike Switzerland, where we have the people have the right to recall, we don't have the system of recall. Therefore, we have to suffer the people that we represent, we elect them and send them to either legislative assembly or to the parliament. Now, in this regard, I would like to make a mention about the duty of the elector. It is when Ambedkar made a beautiful mention at the commencement of the Constitution one day before it was signed on 25th November 1949. He made a mention, we have created a political equality in one go by introducing Article 326. And once that is done, all people are equal. One vote, one value, irrespective of the caste, irrespective of the creed, irrespective of the religion, irrespective of the economic prowess one may have. All inequalities go in one go. That is the beauty of Article 326. Earlier it was 21 years, now it is 18 years for people to vote. And therefore, it is necessary for us to understand the implications and do it better. We had some justification in the initial years. The first election took place in 1952. We had only around 33 crores of people with vast illiteracy, but still people elected some good people. With literacy increasing
and we are not able to elect proper representatives in the democracy to run a concept of good governance. Good governance is one where it is for the people. The elected representatives are for the people. The representatives also forget everything. John Stuart Mill, a political writer, very beautifully explained it, that the art of representation is such that you don't represent only those people who voted for you. You also represent the people who have not cast their vote and who have not voted at all. So it is the constituency you are representing, and I think even the representatives forget that and then try to help people who are only to belonging to their political parties. Now, in this regard, I would like to bring some important issues for the awareness of the voters, that what is it that you should know. First of all, I would put it this way: it is your duty to vote because it is a leveling process. As Ambedkar mentioned, there is no difference, no distinction. Your one vote is equal to the vote cast by Tata's family or Birla's family, right? So therefore, economically, politically, socially, I think we are all equal. You have to understand that. And therefore, to exercise this duty, I want you to keep certain things which we could not do. The Association for Democratic Reforms, an NGO, went and approached the High Court of Delhi and then finally went to the Supreme Court. And the Supreme Court simply ascertained all these four rights which the voters should know. I would like to mention these four rights which the people should know before they go and press the button in the elections. What are they? The Supreme Court very beautifully said that every voter has a right to know about all contesting candidates. एक पार्टी का नहीं है. All contesting candidates के बारे में चार मुद्दे उनके बारे में लोगों को पहुंचना चाहिए. फर्स्ट मुद्दा ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका पढ़ाई कितना है. दूसरा मुद्दा ये है उनका असेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है, उनके पास कितना पैसा है. इसका मतलब वो सिर्फ वो ही नहीं है, उनका पत्नी, उनका बच्चे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, all these people, how much is the asset and liability. How is it important? I'll try to explain a little later. The third is whether they have been convicted of any criminal offense earlier. किसी ने कुछ crime किया है कभी, right? And finally, whether any criminal proceeding is pending against them in any court of law. If these four pieces of information are made available to the people, and I think it is available because when somebody files a nomination paper, they are supposed to file an affidavit. And even today, the Association for Democratic Reforms collects all this information and gives it to the local people in the local media that this is the worth of the individual, this is the amount of crime that he has committed, this is the sentence that is undergoing, right? इनका पढ़ाई इतना है. All this information are made available to the people, and I would request all the people before going to the polling booths, please consider these four pieces of information. Exercise your right meaningfully. Don't look at the caste that somebody belongs to. Don't look at a political party, but ultimately you have to look at somebody who can represent meaningfully. If this is done, I think the voter, the representative, will be loyal to you. But if you choose based on the small gifts they give, and I think I would also request the electors to keep this in mind, please do not accept any gift from them before the election. Do not accept any liquor or any other kind, right? Any other promise, because ultimately they are not giving anything from their money, their pocket. The money comes from the public expenditure, public treasury. So one has to be very, very clear. जो भी पैसा उनको मिलता है, उनसे नहीं है, गवर्नमेंट से मिलता है. ये सब टैक्स्ड प्रॉपर्टी है, एंड देयरफॉर उसको ठीक तरह खर्च करने के लिए हमको थोड़ा होशियारी रहना चाहिए. नाउ ये संविधान में आपको जाने के पहले ये भी सोचना पड़ेगा
whether I have to cast the vote because somebody belongs to my caste, whether somebody belongs to my religion, right? Please avoid that. Because in a democracy, the religion has very little scope. The caste has very little scope. But these are the things which are spoiling us, the last so many elections. And finally, I would like to make a mention, right, that for the people to get not only vote, but also to get represented, the Constitution, संविधान को हमने 72nd and 73rd Amendment Acts में पंचायत एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट के लिए लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए इतना फैसिलिटीज बना के दिया है that people can participate, vote, and 1/3 of the seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribe, and women. And therefore, this is a training ground for them to get trained so that all these parochial tendencies will go and you work only for the development of the people as a whole. I will just stop here because I will come back again as to reiterate the don'ts, what voters should not do. Over to Thank you so Mr. much, Varun. Dr. V. Vijay Kumar, sir. You have clearly mentioned many things. But the question arises from it is that we have a body called Election Commission to keep a check on all these biased practices, whether it is gifts or whether it is, they are dividing us in caste or whatever bad practices they are doing. And also the movements like Anna Hazare's Andolan had tried hard to put across right to recall and other such rights which can, really strengthen the voter in the country. But that has not taken into place. So I would like to come now to Dr. M.K. Bhandari. सर, ये जो सारे मसले हैं, कैसे सशक्त किया जाए वोटर को, इसको लेकर कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन उन कोशिशों को किसी किस्म का अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया जा सका, क्योंकि इनइक्वालिटी आज भी बहुत है। और अक्सर देखा गया है कि अपर कास्ट जो है या अपर जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो तो वोट देने कम जाते हैं, लेकिन वोट देने जाता है वो जो जिनके पास 2 वक्त का खाना भी जिनको नसीब नहीं होता, जो थोड़ा इकोनॉमिकली डाउन है, और उन्हें क्योंकि छोटे-छोटे लालच से लुभाया जा सकता है कि पूरी कोशिशें की जाती हैं। तो इस लिहाज में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए और उन रिफॉर्म्स की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा भारत? धन्यवाद वरुण। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये संवाद रखा है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और मैं आपके सभी दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने के पावन अवसर पर विक्रम संवत 2080 कल प्रारंभ हुआ है और भी कई सारे पर्व, गुड़ी, बिहू, युगादी, तेलंगाना में उगाड़ी और भी सारे पर्व, इन सभी की बधाई देता हूं। आपने अभी मेरे विद्वान मित्र प्रोफेसर वी विजय कुमार, जो वर्तमान में NLIU भोपाल एक अग्रणीय संस्था है, उसके कुलपति हैं, डायरेक्टर हैं, और उससे पहले वो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चेन्नई के भी वाइस चांसलर रहे, और NLIU बेंगलोर, जो कि देश की सबसे पहली विधि विश्वविद्यालय है, उसके भी वरिष्ठ प्रोफेसर और रजिस्ट्रार रहे और मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था पिछले 5-6 दिन से, लेकिन फिर भी मेरे आग्रह पर उन्होंने इस संवाद में भाग लिया है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत संक्षेप में उनको एक्सप्लेन किया है, जो कि लोकतंत्र और चुनाव और वोटर्स के संबंध में है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भाई विजय कुमार जी। अब मैं आपको 3 भागों में संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? अब्राहम लिंकन इन हिज फेमस
world-famous speech at Gettysburg on 19th of November 1863, as President said, and it's a very famous quotation, democracy is for the people, by the people, and of the people. So people are at the center of the democracy. People are the heart and soul of the democracy. Our elected representatives, they represent the people of the country. So when it comes to election, I will just say some pointers and not in detail. Elections are the heartbeat of the democracy. Elections are the festival of democracy. In India, we have every 5 years elections for our legislative bodies, that is Lok Sabha, direct elections I am talking, and Vidhan Mandal, Vidhan Sabha. For Vidhan Parishad and Rajya Sabha, the elections are in an indirect mode where people directly do not vote. Their elected representative vote in a defined manner. Now, coming to our election and election process, we have a very strong legal provisions, constitutional provisions mentioned in Article 324 to 329, where Election Commission, an independent autonomous body, conducts Indian elections. And आपको मालूम होगा, दुनिया ने माना है कि भारतीय चुनाव आयोग विश्व के श्रेष्ठ चुनाव आयोग में से है। हालांकि कई बार उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए जाते हैं, ई वोटिंग पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया है तो मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, और मेरे पक्ष में अगर फैसला आ गया तो मुझे चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है। ये जो पार्टीशन व्यू है, ये लोकतंत्र के लिए और एक मैच्योर्ड पॉलिटिक्स के लिए उचित नहीं है। खैर, तो हमारा जो चुनाव आयोग है उसने अब तक कितने चुनाव कराए हैं, और भारतीय चुनाव आयोग की सफलता 135-40 करोड़ जनता के लिए चुनाव कराना हर 5 वर्ष में, और कई बार बीच बीच में मध्यवर्ती चुनाव भी हो जाते हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है। विश्व का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्वतंत्र चुनाव आयोग है। चाइना की क्या बात करें, वहां एक अलग ही तरह के चुनाव होते होंगे। तो चुनाव आयोग की जब बात करें तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और हमें इस बात का गर्व है। अब हम आते हैं वोटर्स पर। देखिए, हमारा जो मानवाधिकार UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर कहते हैं, उसमें भी राइट टू वोट का उल्लेख है। फिर उसके बाद में जो इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कोवेनेंट बना, मानवाधिकारों को सशक्त करने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए, उसमें भी वोटिंग राइट है। और हमारे यहाँ संविधान में, जैसा प्रोफेसर विजय ने बताया, कि आर्टिकल 326 ये कहता है कि एडल्ट सफरेज, और वो एडल्ट सफरेज 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के टाइम में। तो 18 वर्ष का कोई भी मतदाता अपना वोट डाल सकता है, और उसके लिए वोटर लिस्ट तैयार होती है। समय समय पर उसका चेंजेस आते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में वोटर लिस्ट बनती है, और वो एक पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि वोटर को वोट देने का अधिकार है। और जैसा प्रोफेसर विजय ने राइट कहा, मैं सहमत हूं कि ये अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। इट्स अवर ड्यूटी, बिकॉज इफ यू डू नॉट वोट, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव. The correct and the good people will not be elected. And how we can elect good people without being influenced by any external factors other than the competence, the fairness, the honesty, and the clean image of the voter, of the candidates. Now, when we talk of how to vote, when not to vote, the Electoral People Representation of People Act has made several reforms which governs the election process in detail. Now we have voting right for NRIs. Earlier, prior to 2011, NRIs were not allowed to vote because there was a clause that you have to be physically present to vote at the booth. But that condition has been waived for NRIs by a special amendment. Similarly, we have a provision for nota. If you don't like any candidate, you can simply press a button, nota,
that I don't want to vote for any person because as per me, no person is competent or eligible or whatever. Then VVPAT machine, where you get slip that you have voted. That's a proof that you have voted. Now, the voting percentage is constantly increasing. As Professor Vijay mentioned, that when we were independent and first election took place, the vote population was also less. It was 33 crores. Today it is close to 140 crores. By 2024, when we have next parliamentary elections, it will be touching 140 crores people. In 2019 election of Lok Sabha, the 67.11% people voted throughout the country. It is a national average. In some areas, it was even higher. In some areas, it was lesser. That's a good sign. It's a good sign that people are becoming aware of their right to vote or duty to vote. And to make it more popular, Election Commission celebrates every 25th of January the National Voters Day, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और अभी 25 जनवरी 2023 को 13th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, जिसका उद्देश्य है कि वोटर को जागरूक करना। और इस वर्ष की जो थीम थी वो ये थी, नोट करने लायक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो प्रयास किए जा रहे हैं सभी तरफ से। एनजीओ जैसे एडीआर है, वो सारे जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उनका डाटा पब्लिक करता है कि आप सही व्यक्ति को चुन सके, जिस पर कोई आपराधिक वो नहीं हो, जो जिसके पास आय से अधिक स्रोत इनकम नहीं हो। ये सारी बातें आप देखें और उसके बाद आप वोट करें। लेकिन मैं आपके इस माध्यम से, आज के इस संवाद से ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ बातें हैं जो डिस्टर्बिंग है और आज हमें उन पे चर्चा करनी है। मैं 3 बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं संक्षेप में। पहला तो इलेक्शन के समय हम देखते हैं कि खूब शराब चलती है, खूब ब्लैक मनी आती है। कई बार ब्लैक मनी पकड़ी गई, बंगाल में पकड़ी गई, कश्मीर में पकड़ी, सभी तरफ। मैं किसी एक पार्टी या एक वर्ग की बात नहीं करता हूं। चुनाव आते हैं तो करोड़ों रुपए ब्लैक मनी इधर से उधर जाते हुए पकड़ी जाती है, और जो नहीं पकड़ी जाती है वो कितनी होगी हम कह नहीं सकते। रात को 5 लोग इकट्ठे होते हैं, शराब चलती है और दूसरे पैसा चलता है, वही जो ब्लैक मनी आती है, और फिर तय होता है कि अमुक अमुक कैंडिडेट को, चाहे तो वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर वोट दिया जाएगा। फरमान जारी हो जाता है और वो एन ब्लॉक वोट उस तरफ से पड़ते हैं। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, हमारी चुनावी पार्टियां, मैंने कई बार इस बात पे लिखा है, चर्चा भी की है, आपके साथ भी एक चर्चा हमने की कि इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये जो फ्री बी की बात होती है, पार्टी कहती है हम स्कूटी फ्री देंगे, हम लैपटॉप फ्री देंगे 40,000 रुपए का, हम लड़कियों को स्कूटी फ्री देंगे। अभी राजस्थान में तो घोषणाओं की बहार है, ऐसी ऐसी घोषणाएं हो रही है जो संभव ही नहीं है, और अगर संभव होती है तो स्टेट दिवालिया हो जाएगा, पैसा ही नहीं बचेगा उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन क्यों की जा रही है? क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ये जो हमारे राजनीतिक दलों का, चाहे कोई भी हो, मैं फिर भी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, हम लोग एकेडमिक्स हैं और हम एकेडमिक्स की बात करते हैं। तो इस तरह से चाहे एक्स पार्टी घोषणाएं करे, चाहे वाई पार्टी करे, चाहे जेड पार्टी करे, फ्री बिजली क्यों भाई? पैसा तो जैसा प्रोफेसर विजय ने बताया कि टैक्स पेयर का है, आप और मैं जो सालाना लाखों रुपए टैक्स देते हैं अपनी आय पर, उसी से पैसे से तो आपको देना है। तो वो एक गलत परंपरा है। और तीसरी बात, आजकल धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, धर्म हमारे आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए है, न कि आप देखेंगे कई धर्म गुरुओं को जो जेल में है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, उनको छोड़ दिया जाता है। जब चुनाव आता है तो उनको पेरोल दे दी जाती है, और फिर वो कर्नाटक में, प्रोफेसर विजय जहां से आते हैं, चेन्नई और कर्नाटक में धर्म गुरुओं का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वर्ग विशेष के नेता को इसीलिए चुना जाता है कि वो एक धर्म में विशेष उसकी पकड़ है, एक जाति में उसकी विशेष पकड़ है। तो धर्मगुरु फतवा जारी कर देते हैं आश्रम से, और फिर एन ब्लॉक लाखों वोट उसी तरह चले जाते हैं। ये सब हमको एक सही प्रतिनिधि चुनने में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं।
और फिर हम कहते हैं कि सब गुड गवर्नेंस नहीं है। जब प्रतिनिधि भ्रष्ट तरीकों से चुना जाता है, आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जेल में हत्याओं के मुकदमे उस पर चल रहे हैं और वो चुन के आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चुनकर आ रहा है, जेल में बैठे हुए, जेल में रहते हुए, ये लोकतंत्र पर एक तमाचा है। और मैं समझता हूं ये वोटर्स पर तमाचा है। आखिर चुनते तो हम लोग हैं, वोट तो हम लोग देते हैं, चाहे किसी भी कारण से दें। तो आज हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक दैट इफ वी वांट गुड गवर्नेंस, इफ वी वांट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव who are accountable to us, not for during the poll days, but all through the 5 years, they must be accountable for us. Then we have to elect competent representative. We have to elect those who are ready to deliver good and who are ready to be the people, for the people and by the people. So these are some issues on which I'm happy that you have invited 2 persons, and Professor Vijay is very eminent scholar, legal scholar and administrator. So in my opinion, these are some issues: freebies, interference of religious leaders, criminal background, and bribes and other considerations. The voters must be made aware. We are spoiling ourselves. We are ruining our future if we are electing people with a criminal background. So it is, in a clear words, I would say it is self-suicidal. हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं अगर हम गलत प्रतिनिधि को चुनते हैं थोड़े से प्रलोभन के लिए। तो ये बातें जो मेरे दिमाग में आई, मैंने आपके साथ शेयर की, और आगे आप। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी, आपने बहुत ही पर्टिनेंट मुद्दों को उठाया। और यहाँ पर इस चर्चा का एंड करते हुए, मैं एंड कमेंट्स लेते हुए आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर कमेंट्स चाहता हूँ। हमने इतने वक्त में देखा कि लॉ है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कमी होने की वजह से शराब भी बढ़ती है, कैश भी बढ़ता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन को अमली जमा पहनाने के लिए हाउ बिग विल द, ये जो जागरूकता की मुहिम है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगी? विल दिस लिटरेसी ऑफ योर राइट्स एंड ड्यूटीज कैन प्ले द बिग रोल? सो आई वुड लाइक टू कम अक्रॉस टू डॉक्टर वी विजय कुमार सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत विविड है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है आम आदमी के समझने के लिए। तो क्या मानते हैं आप, इसकी जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, क्या वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस चीज को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की, सही वोटिंग को इंप्लीमेंट करने की? आई थिंक आपने बहुत सही बताया कि हमारे साथ बहुत बढ़िया संविधान है, इतने कानून भी है, इम्प्लीमेंटेशन में इतना इफेक्टिव नहीं है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो क्यों नहीं इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। मैं आपको ये बात एक मुद्दा लेके आना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन has an obligation to conduct a free, fair election. But equally important is the role played by political parties. And to restrict the political parties from doing something or the other, a law is to be made, and that no law is being made. It's only registration of political party that is there. So the Election Commission has brought out something called as Model Code of Conduct. And this Model Code of Conduct is to be observed by all political parties, ruling party or opposition parties. Once the notification is issued, the promises of freebies, ये करना वो करेंगे, ये सब छोड़ देना चाहिए. But ultimately you see that in the implementation part of it, even if some of the political parties are found amiss, giving some money to somebody, money is caught. And beyond that, the Election Commission cannot do anything. So on that issue, we don't have any specific law. So the Model Code of Conduct, as the title goes, is only a moral code of conduct. It is for political parties to implement themselves. And they know very well
moral and legal are two different aspects, right? And therefore giving them freebies, liquor, ये सब immoral है, उनको भी वो भी जानते हैं, फिर भी दे दे क्योंकि उनका short term aim is to win the election, right? And ये वोटर्स को समझना चाहिए कि हम एक 100 रुपए का एक गिफ्ट लिया, 1000 रुपए का एक गिफ्ट ले लिया, क्यों ये गिफ्ट दे रहे हो, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक सवाल उनसे पूछना चाहिए. Why are they giving this 1000 rupees? Why are they giving a gift worth this much of? What is it that they will get the benefit? The benefit shall be much higher than 1000 rupees, and that is why they are doing it. So the election commission in the conduct of free, fair election has very good role, but beyond a point, election commission itself has no specific civil service or civil servants. They're all borrowed from state services. And therefore, it is very, very difficult. There are political observers at the time of election to catch them. And these are the people who catch the huge amount of cash, liquor, so on and so forth during the time of election. But to punish them, it is very difficult to punish, right? And that is the place the model code of conduct has failed. And the election commission has done its best. We can't find fault with that. The second question that you asked, right to recall, right? अन्ना हजारे ये किया है, वो तो ठीक है. The type of population that we have, right? No democracy in the country except Switzerland has this right to recall. And let me tell you, the moment to introduce right to recall, no member will work for 5 years, right? आज चुनाव होगा, उनको रिकॉल करेगा 2 महीने में और 3 महीने में, दूसरा चुनाव होगा, उनको रिकॉल करेंगे, ये तमाशा होके रहेगा. इसीलिए हमारे संविधान के अंदर ये राइट टू रिकॉल तो इतना स्वस्थ रिफॉर्म नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन. The third one, I think Dr. Bhandari very beautifully brought it, the National Voters Day. I think that is a place where the educational institutions, we have to go to schools because they are going to be the fresh voters and tell them, because this has some repercussions even in Karnataka, in a state like Karnataka, where when the students were educated about corruption and they did not take any phone given by the parents, right? Because this is purchased from out of corrupt money, right? So that type of awareness can be created among the children. And I think in the years to come, they will be our asset. जो हो गया है, हम उनको सुधारने में बहुत मुश्किल है, बट फिर भी ट्राई करना चाहिए. जो अभी नया वोटर्स बन के आ रहे हैं, उनको सुधारने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाके उनको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. If all these things are done, Bhandari also brought out a beautiful thing. NRIs can vote. Not only NRIs, the migrants working from one state to going to another state, they can also vote. And I think technology has come out with a remote voting machine. And I think that will also be pressed into. So even if you go from one state to another, when the election takes place in your state, wherever you are, you can still cast your vote. And that it brings us the philosophy, every vote counts. And therefore, those people who do not vote, they lose the right to criticize the government thereafter. If they don't vote, they have no right to critique the government that, आपने ये किया है, वो किया है, करने की कोई वो लायक भी नहीं है, क्योंकि वो वोट नहीं दे रहे हैं. क्या सोचते हैं आप कि बहुत बदला है भारत अब तक और बहुत अच्छी दिशाओं में बदला है, लेकिन अभी भी वो और बदलने की जरूरत है, तो रिफॉर्म्स के मसले पर आप क्या सोचते हैं? मैं दो बातों पर फोकस करना चाहूंगा. एक तो जैसा प्रोफेसर विजय ने कहा कि राइट टू रिकॉल, हमें ध्यान है कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला था और उसके बाद इमरजेंसी लगी थी, उस समय ये मुद्दा आया था कि हमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए. अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, या उन पर भ्रष्टाचार के और कई प्रकार के आरोप हैं, तो हमें उनको वापस 5 साल से पहले, why should we carry the load of such inefficient and corrupt representatives for complete 5 years? It sounds good
in theory, it sounds good that the voters who have sent you to the body have a right to recall you from that body. But as Professor Vijay rightly said, and I agree with him, that in a democratic country like India, this may not be feasible to give this right in the hands of the voters. And given the situation, they may not be able to use this right in a responsible way, or rather it is susceptible to misuse or abuse. So this concept or this perspective that right to recall should be there doesn't seem to be practically feasible. Second point is that voters have right to vote, and all efforts are being made by civil society, by election commission, to educate voters how to vote and to whom to vote a good candidate, basically. मेरा ये सुझाव है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. आर्टिकल 51A जो 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, उसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज में एक प्रोविजन और करें आर्टिकल 51A में कि एवरी एलिजिबल वोटर हैज ए ड्यूटी टू वोट. ये एक उसको रिमाइंडर है कि भाई तुम्हारा संवैधानिक कर्तव्य है. राइट तो है ही तुम्हारा कि तुम्हारे चुनाव वोट देने पर ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य भी है, संविधान में लिखित कर्तव्य है कि तुम वोट करने जाओगे जब भी चुनाव होगा, और अगर तुम एलिजिबल हो तो my one suggestion is that there should be an amendment in Article 51A, that is fundamental duties, and a new fundamental duty. Every eligible voter of India has a duty to vote whenever elections are conducted. So that is another suggestion. And third point, Mr. Varun, you have raised that implementation of law is a big problem, whether it is a taxation law or whether it is a criminal law or it is an election law we are talking about. Yes, I think if you remember, we had a long discussion in one of our panel discussion that we should have one exclusive debate on how to implement laws. What are the impediments in implementation of the law? Is it a lack of political will, or it is a lack of public awareness, or it is a failure of enforcement agencies, or it is somewhere failure of judiciary also in rendering timely justice? So all these issues must deserve a full debate, not just 5 minutes or 10 minutes of debate, but a full debate on how to implement the existing laws. We quite often say that let us enact a law. We don't have a law, let us enact a law. Okay, the parliament or legislative assembly, they enact the law. But what about the implementation of existing laws? We are adding laws after laws in our statute book, in our code book. But what about the implementation? And why implementation is not being done effectively? These are the issues we need to discuss. And I think if given time and opportunity, we will have a full debate on this issue, and we will invite our eminent experts from sociology, from anthropology, from law, like Professor Vijay and other, and we will debate it thoroughly, that why there is a lack of or improper or faulty implementation of. I thank you, Professor Vijay, from my side, and I thank you, Varun, for conducting this very useful discussion on democracy and voters. And I'm sure viewers will get benefit and clue for a free and fair conduct of elections. Thank you so much, Professor Dr. M.K. Bhandari, and thank you so much, sir, Dr. V. Vijay Kumar, sir, to be with us. Can I make two observations? Yes, please. Two observations to conclude. One is how to implement, who makes these electoral reforms. I think if you look at the election from the first general election from 1952 to present, many reforms have taken place. It is not that we have not reformed, right? And still there are many reforms which are in the pipeline. Either the parliament is not willing to make a law because it affects them,
and therefore they don't want these reforms to come into picture. So therefore, there is a need to look at these aspects. The main reason, the culprit, why many laws are not being implemented is, in my opinion, as a student of both law and political science, that the parliament enjoys both the legislative and executive power. The bureaucracy, which is supposed to be neutral, I think by and large it has become a sort of agenda, right, along with the ruling party. And therefore, it is very difficult for them to exercise their independency. And therefore, the government in power will say which law is to be implemented to what effect, who is to be exempted and why, right? And I think once you go to the judiciary, the delays are so much that you don't get an immediate result at all. All these things are combined together that some important electoral reforms are put on the back burners. I would like to wind up by saying one important reforms. If the people have the right to vote and right to contest the election, why not we look at very meaningfully a proposal which was already given long ago, which I have been harping on in every forum, state funding of elections, right? Now, there is a question, people will ask, anyone will contest the election. Not anyone will contest. Unless and otherwise somebody gets 1/6 of the total votes polled, he may not get the benefit or she may not get the benefit. So in that sense, the money, the black money playing an important role in elections can be totally curbed if public funding is thoroughly discussed, analyzed, and then implemented in a good manner. And that is one solution which I feel is possible. To finally conclude, I would like to say all these things go to the credit of the citizens. As the saying goes, an informed citizenry is an asset to democracy, right? The nature of democracy depends upon the awareness that the people have about their right to vote and how they vote. Thank you very much for calling me. And this information, Dr. V. Vijay Kumar and Professor M.K. Mandari will multiply when people like you will come together and we debate and we talk on such particular issues and we break down and simplify all the laws and duties and rights to the people. So, as an editor of Rajasthan Samvad, I'll take the pledge. I'll repeat and repeat such discussions. I'll have such more discussions on the law so that people should know their duties and they should know their rights, and also they should know the implementation part of their rights very well with the